Hello, hi, good evening, everyone. Hi, hello, hi, good evening, everyone. A quick check. Am I audible properly to all of you? Is the screen visible? Hi, Prachi. Hi, good evening. So, in today's class, we are going to study or we are going to practice reading comprehension. All right. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी सब टॉपिक जिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो होगा इम्प्लिसिट रीजनिंग के ऊपर. ठीक है. हेलो, हाय, गुड इवनिंग. एक क्विक कॉन्फर्मेशन दे दो यार. ठीक से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? एक बार मैं पोस्ट भी कर देता हूँ, रिमाइंडर. एंड उसके बाद शुरू करते हैं हम अपना प्रैक्टिस. ठीक है. चलो ठीक है. Alright, my name is Vaibhav Prakash. I'm a National Law University Ranchi alumnus. मैं 2011 से 2016 के बीच में अपना 5 years of integrated program जो है लॉ कोर्स जो है वो मैंने कंप्लीट किया था NLU रांची से. एंड सिंस my final year of law school, I have been training students for various law entrance examination, and I'm also doing my masters in law presently. So that is something which I'm doing parallelly, because teaching and training is something which I absolutely enjoy, right? And you can join me on my Telegram group as well as Telegram channel, जिसका कि नाम है वैभव प्रकाश अनअकैडमी लॉ. यहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हो, अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको मेरे क्लास का स्केड्यूल जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा. एवरी टाइम दैट आई टेक अ क्लास, आपको यहाँ पे टॉपिक का नाम, टाइमिंग और लिंक जो है वो मिल जाएगी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लो, क्योंकि प्लस के कोर्सेज जो होते हैं वो आपको यहाँ यूट्यूब पे नहीं मिल पाएंगे. जैसे आज ही जैसे मैं एक बैच में स्टैटिक जी के पढ़ा रहा हूँ अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो आप अपना प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का ले सकते हो, बेसिंग अपॉन इट्स वेरी फ्लेक्सिबल प्लान्स दैट यू हैव, और बेसिंग अपॉन आपकी नीड जो है वो आप ले सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 साल का लेना है तो इट कॉस्ट्स यू 23,100 रुपीज़, एंड यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड विच इज़ VAI10, which will get you a 10% flat discount on the overall course fee. So whenever you decide to go for your plus subscription at Unacademy, don't forget to use VAI10, which is my referral code. Hello, hi Gautam, hi Samir, hello everyone, good evening. और कुछ क्विकली आपको फीचर्स बता दूं. अनअकैडमी जो आपको ऑफर करता है अपने प्लेटफॉर्म पे, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स in India, and where you get the option of raising your hand and asking your doubt directly with the educator while you talk to the educator. ठीक है, तो आप बात करके, बट ये प्लस के फीचर्स है. ठीक है. सो आप बात कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो. आपको अनलिमिटेड क्विजेज मिलते हैं, लाइव या रिकॉर्डेड, आप कैसे भी अटेंड करो. आपको एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स जो है उनसे पढ़ने का मौका मिलता है, जिन्होंने क्रैक किया है एग्ज़ाम. उनको पता है कि आपको कैसे हेल्प करनी है लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. एंड उसके बाद आपको कई सारे स्ट्रैटेजी सेशंस भी मिलते हैं जो कि एजुकेटर्स लेते रहते हैं, जिससे कि आपको समझ में आता है कि आपको प्रिपरेशन कैसे
करनी चाहिए, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, और टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शुअल टेस्ट, मॉक टेस्ट, सभी कुछ मिलता है। देर आर मल्टीपल बैचेस जो कि अभी चल रहे हैं। क्लैट 2023 की बात करें अगर, तो जो लोग 11th ग्रेड में हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए एक रैंकर्स बैच है जो 22 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। यू कैन जॉइन दैट बैच। एंड क्लैट 2022 के लिए एक बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 27 अक्टूबर से। ठीक है, तो 1 ईयर का बैच है जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे बाय डिफरेंट एडुकेटर्स। सभी एडुकेटर्स मिलके आपको पढ़ाएंगे। So you get to know and study from all these educators at so you get to study through different educators all the subjects from the very beginning. Similarly, CLAT 2023 के लिए एक बिगिनर्स बैच स्टार्ट हुआ है लॉ टाइगर्स करके, जो 29 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ये 2 साल का कोर्स है, इसमें भी आपको सारे डिफरेंट एडुकेटर्स सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे। क्विज फीचर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं अनअकैडमी में। आप खुद के लिए भी क्विजेस लॉन्च कर सकते हो, फ्रेंड्स के लिए भी कर सकते हो, और एडुकेटर्स के क्विजेस में भी पार्ट ले सकते हो। और अगर प्रैक्टिस की बात करें तो आपको वीकली T20 टेस्ट मिलता है मंडे टू फ्राइडे, जो कि ओपन एंड फ्री फॉर एवरीवन है। डेली 20 मिनट्स का 20 क्वेश्चंस का टेस्ट मिलता है फॉर ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। और सैटरडे को आपको 1 घंटे का 60 क्वेश्चंस का टेस्ट मिलता है, और संडे को नेशनल लेवल मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है, राइट। और स्पेशल क्लासेस जो होते हैं, जो आपको अलाउ करते हैं टू अंडरस्टैंड कि अनअकैडमी में क्लासेस होते कैसी है। आप लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, इंटरैक्टिव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, पोल्स के थ्रू क्विजेज होते हैं, तो इट बिकम्स वेरी फन। प्लस सब्सक्राइब स्टूडेंट्स कैन रेज देयर हैंड एंड टॉक टू द एडुकेटर, एंड यू कैन अटेंड इट लाइव और रिकॉर्डेड। तो मेरी स्पेशल क्लासेस जो होती है वो फ्री होती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। सो इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड मी ऑन अनअकैडमी, प्लीज़ डू दैट। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट व्हेनेवर आई शेड्यूल स्पेशल क्लास तो आप उसको आके अटेंड कर सकते हो। और शुरू करते हैं पहला प्रैक्टिस सेट। 3 पैसेजेस हैं करने को, 15 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। आराम से पढ़ेंगे, कोई रश नहीं है, अच्छे से समझेंगे पैसेज को, और फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे, एंड विल ऑल्सो बी सॉल्विंग क्वेश्चंस विथ रेस्पेक्ट टू ईच आरसी पैसेज। तो ये है हमारा पहला पैसेज जो हम लोग करेंगे, राइट। लेट्स बिगिन।
ऑल राइट, तो पढ़ लिया हम लोगों ने. आर वी डन रीडिंग द पैसेज? ठीक है. तो बेसिकली इस पैसेज की अगर बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमने पढ़ा और हमने समझा, right? So the most important thing is that we have read this passage and we have understood this passage. Once we understand the passage, it becomes easier for us to answer all the questions that the test all the questions that the test might have asked us. Okay, तो पहले देखते हैं कि ये पैसेज बात क्या कर रहा है. ये पैसेज जो है वो एक कैरेबियन आइलैंड कॉल्ड सेंट मार्टिन के बारे में बात कर रहा है. ठीक है. सो इट इज टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेंट मार्टिन. ठीक है. प्रिडोमिनेंटली देखें तो सेंट मार्टिन की हिस्ट्री की बात कर रहा है, बट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंट मार्टिन. तो ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों के बारे में अबाउट सेंट मार्टिन दे रहा है. प्रेजेंट से स्टार्ट किया पैसेज ने, वेयर इट सेज दैट इट्स अ कैरेबियन आइलैंड विच इज़ अ वेरी वेरी फेवरेट वेकेशन स्पॉट फॉर द नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन एज वेल एज यूरोपियंस. डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में जाते हैं, डिफरेंट मंथ्स में जाते हैं वेकेशन मनाने, बट इट्स अ वेरी फेवरेट वेकेशन स्पॉट फॉर नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन एंड द यूरोपियंस. ठीक है. देन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री that the French and the Dutch people settled on this island in the 1600s, right? So some 400 years पहले की बात कर रहा है, right? And then it talks about that अब उसके बाद वो आइलैंड डिवाइड हो गया. फ्रेंच कैपिटल इज मैरीगॉट एंड डच कैपिटल इज फिलिप्सबर्ग. अब फिर वो वापस आता है प्रेजेंट पे. तो देख रहे हो कैसे प्रेजेंट, पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर पास्ट, इस तरीके से ये पूरा पैसेज जो है वो चल रहा है. देन इट सेज दैट टूरिस्ट जो है उनको इसकी इंट्रीगिंग हिस्ट्री जो है वो पता है. अब इंट्रीगिंग का मतलब क्या है? ये एक वर्ड है इंट्रीगिंग. इंट्रीगिंग का मतलब क्या होता है? एनीवन जिसको पता है, जो बताना चाहेगा, आप लाइव चैट में बता सकते हो, बट जल्दी बताओ, नहीं तो फिर मैं ही बताऊंगा. चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ. इंट्रीगिंग का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग. देखो, कभी भी वर्ड मीनिंग्स जो होती है ना, वोकैबुलरी बिल्डिंग, उसको सबसे बेस्ट तरीका होता है, द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग अ वर्ड इज़ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इन योर मदर टंग. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल माई मदर टंग इज़ हिंदी. तो अब मेरे को अगर इंट्रीगिंग हिस्ट्री जाननी है ना, तो मैं कोई बहुत डिफिकल्ट हिंदी वर्ड नहीं चूज़ करूँगा, बट मैं एक फ्रेज़ भी अगर होता है ना, तो मैं एक फ्रेज़ के थ्रू भी याद कर लेता हूँ. तो बेसिकली इंट्रीगिंग का मतलब होता है कोई चीज़, एनीथिंग जो कि मेरा अटेंशन को अट्रैक्ट करती है, समथिंग विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग. ठीक है. जो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी कि मेरे को इसके बारे में जानना चाहिए, आई शुड नो अबाउट दिस. That is what is the meaning of the word intriguing. Vedansh writes curiosity. Very correct. ठीक है. Curious, जानकारी लेने का मन करता है. तो ancient artifacts जो है वो 6000 years stone age का, 6000 years ago का stone age का मिला. 1200 years ago वहाँ पे अरावक Indians जो है वो inhabit करते थे, वहाँ पे रहते थे. They were very peaceful kind of people who were living under the guidance of their chief. उसके बाद अरावक जो है वो 1300s में आए, ऐसा बता रहा है. एंड देन दे वर डिफीटेड एंड दे वर फोर्स्ड टू लीव द आइलैंड बाय अ हॉस्टाइल ट्राइब जो कि साउथ अमेरिका से आया था. हॉस्टाइल ट्राइब ऑफ इंडियंस जो कि साउथ अमेरिका से आया था. दिस ट्राइब वॉज कॉल्ड एज द कैरिब. तो करीबियन सी का जो नाम है वो कैरिब ट्राइब के कारण ही आया. देन दे ऑल्सो से दैट दे वर वेरी वॉरलाइक, they were very violent people, they were warlike people, and they were also cannibalistic. Cannibalism का मतलब क्या होता है? People who eat human flesh. ठीक है. तो वो यहीं पे वो बोल रहे हैं eating the enemy warriors they captured. तो जो आपके मतलब कैरिब ट्राइब के जो एनिमी होते थे, जिनको वो कैप्चर करते थे, उनको मार के वो खा भी जाते थे.
सो दिस वॉज द काइंड ऑफ ट्राइब दैट द कैरिब वॉज. और इसी से वर्ड कैनिबल भी आया, जो कि स्पेनिश में कैरिब इंडियंस का नाम था. ठीक है, स्पेनिश वर्ड कैनिबल इज द कैरिब इंडियंस का नाम. तो यहीं से वर्ड जो है कैनिबलिज्म का मतलब आया कि these are the kind of people who eat human flesh, right? Howsoever, Spanish people arrived in the 15th century. 15th century में 15th century का मतलब 1400s में Spanish people came and they brought with themselves diseases जो कि European diseases लेके आए. ठीक है, जिसके लिए these Indians had, like Carib Indians had no immunity. So most of them succumbed to common European illness. Succumbed का मतलब they died, they could not survive. Succumb का मतलब होता है मर जाना. So they could not succumb, so they could not survive the European illness, and the rest of them died from the hard labor that was forced upon them. ठीक है, so this was the entire passage that they are talking about. चलो अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन. यहां पे आपको बोल रहा है इन्फर करने के लिए. वॉट कैन यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज. इन्फर का मतलब वॉट हैव यू अंडरस्टूड. वॉट हैव यू अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज दैट द स्टोन एज पीपल लिव्ड ऑन सेंट मार्टिन अराउंड विच ईयर. Stone Age people lived on Saint Martin around which year? Okay, चलो पैसेज एक बार फिर से दिखा देता हूं. Hi, I think I'm back, right? हाँ ठीक है, चलो. So what should be the correct answer to question number 1? अच्छा, जब भी आपसे इन्फरेंस की बात करें ना पैसेज में, तो इट मे नॉट बी नेसेसरी दैट डायरेक्टली आपको आंसर नहीं मिलेगा. यू विल हैव टू अप्लाई योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, एंड इन दिस क्वेश्चन इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ मैथ. व्हाई? ऑप्शंस देखो. ठीक है, सो आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट तो जाने दो इसको. बिफोर 6000 ईयर्स पहले की बात कर रहा है, राइट? So it should also account for 2000, it should also account for 2000 years of like 2000 years of Christ. So 6000 minus 2000 is 4000 before Christ. 6000 साल पहले स्टोन एज पीपल की अगर बात करें तो ए जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, बाकी सी और डी जो है वो इनकरेक्ट मैथमेटिक है. सो हमारा इन्फरेंस जो है वो करेक्ट आंसर आता है 4000 बिफोर क्राइस्ट. तो दिस वाज सिंपल मैथ. ठीक है, यहाँ पे इन्फरेंस जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था कि ऑप्शंस जो है वो आपको टाइम पीरियड की बात कर रहा था, या तो बिफोर क्राइस्ट या तो आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट. ठीक है, मतलब वैसे ही हम लोग देखते हैं ना, जनरली वी सी इट दिस वे. सो 6000 years ago you need to account for 2000 years
of Christ era as well. माइनस कर दो, 4000 BC is the correct answer. चलो, question number 2. Which of the following is not true about the Carib Indians? Which of the following is not true? ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये तो प्लीज किसी का गलत नहीं होना चाहिए. बताओ बताओ. कोई भी आंसर नहीं दे रहा, क्यों यार? व्हाट हैपेंड? वेदांश प्लीज क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखो. करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. हमने पैसेज में देखा था, पैसेज में बहुत क्लियरली जो है हमने देखा भी था और हमने पढ़ा भी था. कैरेबियन सी वॉज नेम्ड आफ्टर द ट्राइब विच वॉज कॉल्ड एज कैरेब. ठीक है, they were extremely warlike, they were cannibalistic, who would eat human flesh. ठीक है, and the Arawak Indians were defeated and forced to abandon by a hostile tribe of Indians जो कि कैरिब था. तो ये सब कुछ जो है वो यहाँ इतने में हमको दिया हुआ है पैसेज में. The sea was named after them, yes. Caribbean Sea, ये करेक्ट है. They ate human flesh, yes. Cannibal word जो कि स्पेनिश वर्ड है फॉर दिस ट्राइब, उसका मतलब ही होता है कि they ate human flesh. जो लोग को कैप्चर करते थे उनको मार के खा जाते थे. एंड दे सेटल्ड आफ्टर डिफीटिंग द अरावक इंडियंस, यस एब्सोल्युटली करेक्ट. अरावक इंडियंस को डिफीट किया था साउथ अमेरिका के इंडियन ट्राइब जिसको कि कैरिब इंडियंस कहते थे. सो व्हाट, तो ये ए सी और डी करेक्ट है. सो विच इज नॉट ट्रू अबाउट देम दैट दे वर पीसफुल फिशरमैन, हंटर्स एंड फार्मर्स. नो, दे वर एक्सट्रीमली वॉरलाइक. ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है. चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. According to the passage, the Carib Indians were finally defeated by dash. कैरिब इंडियंस को कौन डिफीट किया? Who defeated the Carib Indians according to the passage? You want me to go to the passage? I will quickly go to the passage. कुछ इतना पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया वहां पे देखो, वहीं पे आंसर है. ठीक है,
Okay, so this is question number 3. Carib Indians were finally defeated by correct sickness and forced labor. So यहाँ पे दिया हुआ है स्पेनिश पीपल अराइव्ड इन द 15th सेंचुरी. 1400s में मैंने बताया भी था 1400s में स्पेनिश अराइव्ड एंड दे कैरीड डिजीजेस टू विच दीज इंडियंस हैड नो इम्यूनिटी. Carib Indians had no immunity. Many Indians succumbed to common European illness and others died from the hard labor that was forced upon them. So मेरे को ये पैसेज क्योंकि क्लियर था, मेरे को आंसर पता है, ए करेक्ट है, मैं बी सी और डी पढ़ के अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगा. ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. स्ट्राइफ का क्या मतलब होता है? What can you infer from the passage which would be the meaning of the word strife? ओके, कैनिबलिज्म का मतलब होता है ईटिंग ह्यूमन फ्लैश. तो ये हो नहीं सकता. ठीक है, मैं एक बार तुमको दिखाता हूं स्ट्राइफ है कहां. They had no permanent chiefs or leaders except in times of strife. The Carib tribe, they represents the Carib tribe. The Carib tribe had no permanent chiefs or leaders except in times of strife. तो मतलब चीफ और लीडर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर दिए. कैनिबल का मतलब ईटिंग द एनिमी वॉरियर्स, ए भी डिलीट कर दिए. ड्यूटी फ्री का मतलब क्या होता है? टैक्स फ्री. टैक्सेशन की तो बात ही नहीं हुई है पूरे पैसेज में, तो हमने सी भी एलिमिनेट कर दिया. Cannibalism is eating human flesh, duty free is tax free, chief is like a leader, a head. ये तीनों हमने एलिमिनेट कर दिया. तो स्ट्राइफ का मतलब क्या हुआ? वॉर. और इन जनरल ऑल्सो स्ट्राइफ का मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली वॉर बट अ सिचुएशन जहाँ पे कि टसल हो रही है, लाइक वेयर देयर इज अ टसल बिटवीन ग्रुप्स. ठीक है, तो वही उसी का मतलब होता है स्ट्राइफ. सो बी इज द करेक्ट आंसर. चलो पांचवा क्वेश्चन, विच इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पैसेज. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, प्रेजेंट डे सेंट मार्टिन इज वॉट? फर्स्ट पैरा में इसका आंसर दिया हुआ था. फर्स्ट पैरा लास्ट लाइन.
And to this day, the island is divided between the two of them. The French capital is Marigot, the Dutch capital is Philipsburg. First para, last line, and your answer is C. It is shared by the French and the Dutch. Dutch का capital Philipsburg है, French का capital Marigot है. Saint Martin, present day, is shared by the French and the Dutch. So your correct answer is C. Not a difficult passage. Chalo. Let's come to the second passage. Fadafad. It is okay to take time and understand the passage properly, because once we understand the passage, solving those 5 set of questions will become very easy. So take your time, understand the passage well, and then we'll come to the questions. Alright, so this particular passage is talking about metaphor. ठीक है? एक मेटाफर होता क्या है? मेटाफर इज अ पोएटिक डिवाइस जो कि कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है. एंड इट सेज दैट इट कंपेयर्स सिमिलर क्वालिटीज ऑफ टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है? सो बेसिकली ये कह रहा है कि पोएट जो है, जो फील कर रहा है, वो उसको एक्सप्रेस करता है. एंड वो जिस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, सामने वाला पर्सन हु रीड्स those sentences, those lines, should be able to understand exactly what the poet is trying to convey. ठीक है? I understand precisely where this person is coming from. This is what the other person should understand, and therefore understanding metaphor is important. अब देखो लास्ट में आओ. It took 14 sentences to clarify what a simple metaphor communicates in only 5 words. हमको 14 sentences लग गए समझाने में. तो क्या समझाया जा रहा है? It has taken an example of rose. Love and the rose. So on one side it says rose and love
का पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया. What? It is good to the senses, visual, tactile, and the oral senses, which is sight, touch, and sound. Uh, the appearance seems perfect. Each petal is symmetrical. Isn't this how love should be? Absolutely. Your loved one should be a delight to your eyes, to your touch, to your senses, to your feel. If you smell your loved one, you should feel very good, amazing. But then it also talks about roses have thorns, which is the darker side of rose. Then it says that you should be careful. Love is a feast to the senses, but it can also overwhelm us, it can also hurt us. So basically, if you reach out to one with absolute trust, any object, any person, of his or her affection, it can also cause you great harm. तो पोएट जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है कि दोनों ही चीजें यहाँ पे अवेलेबल है. Love is something which will give you immense pleasure, but love is also something which can give you immense pain. So ये comparison जो है of love and rose is the metaphor. ठीक है? चलो. So what is the अच्छा ये question number 6. What is the main idea of the passage? Sachin, please write the question number and then your answer option. Absolutely correct. The main idea of the passage is metaphor, which is a great poetic device. The entire passage revolves around metaphor. बाकी तीनों में metaphor word भी use नहीं है. Very good. Question number 7. It can be inferred that a metaphor is a dash. What is a metaphor? सचिन यार एक ही बार लिखोगे भी ना, अगर अगर मान लो तुम 7 का ए भी लिखते हो तो मेरे को समझ में आता है. 7 का ए मतलब इसका कोई पॉइंट नहीं है. करेक्ट. 7 का ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Sachin, Imanshi, Vedansh, Prachi, all of you got this correct. Very good. Metaphor is a type of figurative language. It is not the only poetic device. ठीक है? It is not precise enough. ऐसा भी नहीं कहा है. And it is type of flower in a poem. ये तो कतई नहीं है. So it's a type of figurative language. Metaphor is one of the figures that is used in language, English language, right? Question number 8. According to the passage, thorns. ये मैंने एक्सप्लेन भी करा है. C is the correct answer. It adds a new element to the image of love. Thorns add a new element to the image of love. Chalo. Question number 9.
ये भी आई हैव एक्सप्लेन्ड, तो अगर एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से सुना होगा तो भी आंसर करेक्टली कर लोगे. Yes. Love is a rose metaphor means that it is a combination of good and bad experiences. The petals signify the good experiences and the thorns signify the bad experiences. So it's a combination. So D is absolutely correct. Very good. Question number 10. Absolutely correct. Very good. The poet's intention here, according to the passage, is for you to understand what the poet is experiencing at that moment. ठीक है. So अगर मैं metaphor use कर रहा हूँ to write a poetry, so when you read the poetry you should be able to precisely understand what I am going through at that moment. So that is what is the poet's intention. So C becomes the correct answer. Sure. Now we come to the third passage. मोजार्ट के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा. If you have not listened, if you have not heard any of Mozart's symphony, I would highly recommend you people to listen to some of Mozart's work.
It's just plain music, but it's phenomenal. And he's considered to be one of the most talented artists of all time. तो ये उनके ऊपर ही ये पूरा पैसेज बेस्ड है कि how his life progressed. He was a child prodigy. यहाँ पे आया ना वर्ड. So he was a prodigy. He was a child prodigy, where he picked up. He understood how to play violin, how to play keyboard. Uh, at a very young age of 3 to 5 and 6. By the time he was 6 years old, he was giving live concerts. He was performing before the European courts. He went to Munich, then he went to Vienna, and जो फादर थे Leopold, he was also an assistant concert master. So he knew how concerts worked. And so he took both the children and, of course, predominantly Wolfgang, जो उनका पहला नाम था, Wolfgang को he extensively toured, and for a fee he was performing at concerts. A concert would go for like 3 hours, and they would be performing. The children would be performing at least two concerts a day. So around 6 hours is what he would be playing on a regular basis. So this is exactly what everything this passage denotes. चलो, a good title. अच्छा, sorry, ये है question number 11. A good title for this passage would be what? Absolutely correct. The early life of a musical prodigy. Mozart, the early life of a musical prodigy is the correct answer. Why? Because stage parents a historical perspective नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमिनेट करो. वो खाली एक पेरेंट की बात कर रहा है. पर्सपेक्टिव तो दो तीन को कंपेयर करके मिलेगा ना. तो बी एलिमिनेट हो गया. क्लासिकल म्यूजिक के बारे में कहीं भी बात नहीं हुई है. किस टाइप का म्यूजिक प्ले हो रहा था वो कुछ नहीं पता है. मोजार्ट द शॉर्ट करियर ऑफ अ म्यूजिकल जीनियस नहीं. ये खाली हमको बताया कि उनके अर्ली लाइफ में क्या हुआ था. बाद में क्या हुआ, यंग एज में क्या हुआ, लेटर स्टेज में क्या हुआ, हमको नहीं पता है. तो हम ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते. So C definitely is my correct answer. चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. डायरेक्ट पैसेज से क्वेश्चन है ये. Wolfgang became interested in music because what was that turning point where Wolfgang Mozart became interested in music? Maria Anna, who was the older sister, was learning the clavier, an early keyboard instrument, when her 3-year-old brother took an interest in playing. This is your answer. Sorry. Wolfgang became interested in music because he saw his sister learning to play an instrument. "13. What was the consequence of Wolfgang's first public appearance?
तुम लोग सब एक दूसरे का देख के आंसर कर रहे हो क्या? सबका कैसे गलत हो सकता है? The correct answer is B. I'll show you how. On their way to Vienna, the family stopped at Linz, where Wolfgang gave his first public concert. By this time, Wolfgang was not only a virtuoso, he had also mastered the violins. The audience at Linz was stunned, and the word of his genius soon traveled to Vienna. In a much anticipated concert, Mozart's children appeared at the Skondron Palace on 13th October 1762. So, before they performed at this palace and charmed the emperor and the empress, they performed for the first time for an audience in Linz. So therefore, the correct answer is for first public appearance, the word of Wolfgang's genius spread to the capital. And thereafter, when he went on to perform, the emperor and empress जो थे वो they were charmed. ठीक है? चलो, question number 14. Which of the following statement is not supported? Is not supported by the passage. जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी फटाफट. And the correct answer is D. पैसेज में कहीं नहीं दिया है that he preferred violin to other instruments. Mary Anna was a talented musician in her own right. ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूं कहाँ है. The Mozart children, which includes Wolfgang and Anna, both of them appeared at the palace and they utterly charmed the emperor and empresses. ठीक है, तो मतलब Mariana also was talented in her own light, though Wolfgang might have overshadowed her, but she was equally talented. So therefore B जो है वो eliminate हो गया. The father Leopold was instrumental, yes, तो ये भी नहीं, ये भी support कर रहा है. And his childhood was devoted to his musical career, yes, 3 to 6 year का तो बात ही कर रहा है पूरा passage. D is the correct answer. चलो final question फटाफट बताएंगे. According to the passage, during Wolfgang's early years, child prodigies were
Yes, the correct answer is they were accustomed to extensive concert tours. ये लास्ट में जो है दिया हुआ था. It was not uncommon for prodigies to make extensive concert tours. But at the time, it was not uncommon for prodigies to make extensive concert tours. So they were accustomed to extensive concert tours. Okay? So with this, we come to end of the reading comprehension class. I hope you guys got a good practice to do. There's also a Unacademy Plus course जो अभी चल रहा है मेरा, मैं ले रहा हूँ law of contracts के ऊपर. So you can join if you don't have a plus subscription of contract, you can join. Subscription खरीद लो और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है जो कि 21 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है उसको अटेंड करना जो है वो शुरू करो. ठीक है. और दूसरा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कोर्स जो है वो आज से ही स्टार्ट हो रहा है 8:30 बजे से. सो इफ़ यू आर अ प्लस सब्सक्राइब स्टूडेंट यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स एंड अटेंड. इसमें आज हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे, बट ऑल ऑफ दिस इज़ पेड कोर्सेज. ठीक है. तो इसके लिए आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. ऑलराइट. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल अनअकैडमी लॉ. PDF डाउनलोड जो है वो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ही कर सकते हो. And don't forget to like and share, and also to press the bell icon so that whenever a class is scheduled, you get a notification about the same. On that note, thank you so much. We'll see you again all very soon. Till then, stay safe, take care. This is Vaibhav Prakash signing off. Bye bye.